Alright, welcome to the newspaper of 3rd of July, Indian Express. So, where shall we begin? NIA to probe Amravati killing. Police say mastermind among 2 new arrests. ठीक है, अब ये चलता रहे, इनको ये लोग प्रोब वगैरह करें तो अच्छा है. ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हो, जल्दी से जा कर के NIA चेक कर लो क्या जुरिस्डिक्शन है. आई गेस आ गया था, इसी पेपर में सवाल आ गया था या पिछले वाले में आया था कि whether they can undertake foreign operations or investigations on foreign soil outside the territory of India or not करके. अभी तो सबसे ज़्यादा चमक रहा है ये. FCRA compoundable offences up from 7 to 12. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं कि जो कि अंडर ट्रायल हैं ऐसे समय पे जो ऑफेंडर है, जो जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, वो बंदा अगर किसी तरह का समझौता मान ले, आउट ऑफ कोर्ट ले जाने की बात करें, मतलब मांडवली कर ले, तो हो सकता है कि उन्हें अलाउ किया जाए. भाई इतना मुआवजा भरते हुए आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया या फिर आपने पब्लिक मशीनरी का इस्तेमाल किया, तो उसका इतना सा मुआवजा दे करके आप जाइए, छोड़ा गया. समझ रहे हैं? पूरा ज़रूरी नहीं है कि भाई मर्डर ही किया है, एकदम मार के ही काट के छोड़ेंगे इसको बस. With the Ministry of Home Affairs effecting changes in the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) and its rules through 2 gazette notifications Friday night, political parties, legislatures, members, election and candidates, judges, government servants, journalists and media houses among others, all barred from receiving foreign contribution, will no longer be prosecuted if they receive foreign contribution from relatives abroad and fail to intimate the government within 90 days. The amended rule makes this a compoundable offence and the recipient will be required to pay 5% of the foreign contribution received. Earlier, such an offence would entail prosecution in a court of law. The new notifications have increased the number of compoundable offences under the Act from 7 to 12 and this is one of them. Okay, so जो कि ये मतलब प्रॉपर वायलेशन हुआ करता था पहले, to have money sent in by anyone. अभी खाली जो आपके रिलेटिव्स हैं इन लोगों के, इस प्रकार के लोगों के, इलेक्शन कैंडिडेट्स, पब्लिक सर्वेंट, जजेस, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस वगैरह, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, ठीक है. तो अब अगर ये अपने रिलेटिव से मंगाते हैं पैसे और विद इन 90 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो भी इनकी जान नहीं ली जाएगी. छोटा सा कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये. 5% के जो भी कंट्रीब्यूशन आया उसका 5% दे करके ये छूट सकते हैं. यही है बात जानने की बस, कि अब से रिलेटिव से मंगाया जा सकता है. The other key changes are exemption from intimation to the government for contribution less than rupees 10 lakh. The earlier limit was rupees 1 lakh received from relatives abroad. अच्छा, पहले एग्जेम्पशन था सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही अगर आप मंगाएं और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ना करें तो वो माफ़ किया जा सकता है. अब वो लिमिट बढ़ा करके 1 लाख से 10 लाख कर दी गई है. इंक्रीज इन टाइम लिमिट फॉर इंटीमेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स. टाइम लिमिट भी बढ़ा दी है. पहले 30 दिन हुआ करते थे, आज की तारीख में 90 दिन है मेरे ख्याल में. On the compoundable offences, the Gazette notification said, offence punishable under sections 3, 11 and 35 of the Act, read with Rule 6, for failure to intimate about receipt of foreign contribution within the prescribed time limit, shall be compoundable with a penalty of 5% of such foreign contribution received in a financial year. Section 3 of the FCRA states, no foreign contribution shall be accepted by any candidate for election, correspondent, columnist, cartoonist, editor, owner,
printer or publisher of a registered newspaper, judge, government servant or employee of any corporation or any other body controlled or owned by the government, member of any legislature, political party or office bearer thereof, organization of a political nature as may be specified under subsection 1 of section 5 by the central government, association or company engaged in the production or broadcast of audio news or audiovisual news or current affairs programs through any electronic mode or any other electronic form as defined in clause R of subsection 1 of the section 2 of the Information Technology Act 2021 of 2000 or any other mode of mass communication, correspondent or columnist, cartoonist, editor, owner of the association. भाई ये पैटर्न देख ले मैं कि कहीं मान लीजिए जैसे अभी भी इस बार भी पेपर में आए हैं ना सवाल जैसा एक वो था कि अगर मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ, जीपीएस उड़ जाएगा, शॉर्ट वेव रेडियो, ऐसे 7 ऑप्शन दे दिए और 7 ऑप्शन के 4 ऑप्शंस के अंदर मस्त एकदम कॉम्बिनेशंस बना दिए एमसीक्यू के अंदर। तो संभावना है ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाए। भाई पैटर्न आपको पता होना चाहिए, इसमें से ऑड वन आउट अगर कोई आ जाए क्वेश्चन के अंदर, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि नहीं ये नहीं था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 2 साल से डिस्कशन में चल रहा है। रही बात राइटिंग की, तो वहाँ पे ऐसा है कि सर ये इसको लेकर के काफ़ी टाइप के ओपिनियंस है लोगों के कि गवर्नमेंट ये कंट्रोल करना चाह रही है छोटी एनजीओज़ को भी और इस तरह से ऐसा कर रही है वैसा। यू शुड नो द ऑफिशियल वर्जन, द रीज़न गिवन बाय द गवर्नमेंट। I think late last year I just read a newspaper article wherein it was मतलब put in कि भाई गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था, why toughen the FCRA so much. So they said there was a report by Intelligence Bureau in 2018 which uncovered the whoppingly high number of these such organizations, NGOs, private organizations, which do not share any of their financial credentials with, their regulator bodies or registering bodies. And as a matter of fact, I don't know how did they reach this figure, but they said ये जो NGOs होते हैं ये they act as मतलब रिबेल्स विदाउट अ कॉज, एंड वो लोग कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी कहीं भी होती होगी देश के अंदर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में वो करेंगे। एंड लाइक दैट दे सेड दे एक्चुअली कॉज्ड अ हार्म to the extent of 2 to 3% of GDP every year by halting and disrupting developmental works through their protests in favor of people, in favor of environment at times, I don't know what all. So, yeah, premise, it would be good if you know. The other key changes in Rule 6 of the Act. The words 1 lakh rupees have been replaced with 10 lakh rupees and the words 30 days have been replaced by 3 months. जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, ये 2 और बड़े changes किए हैं. The Rule 6 deals with intimation of receiving foreign contribution from relatives, and the amendment will allow individuals to receive up to rupees 10 lakh from relatives abroad without intimating the government. In case the amount is more than rupees 10 lakh, the receiver will get 3 months instead of 1 to intimate the government. The ministry is constantly working to ease compliance burden on NGOs. These steps have been taken with the same objective. It will give them more room for compliance and even compound certain offences that were punishable earlier, an official of the Ministry of Home Affairs said. In Rule 9, this you must know, the operation of this Act comes under the powers of Ministry of Home Affairs, FCRA. In Rule 9, which deals with the application for obtaining registration or prior permission to receive foreign contribution under this Act, the government brought amendments that will now give NGOs 45 days instead of 15 days under the earlier rule to intimate the Union Home Secretary about 1 or more bank accounts opened for utilization of foreign funds received.
इसमें भी चलो लिमिट बढ़ा दी, 15 की बजाय 45 दिन तक आप इन्फॉर्म कर सकते हो। Excuse me. The same extension of time for intimation on bank accounts has been offered to NGOs seeking prior permission for receipt of foreign funds. In Rule 13, which deals with declaration of receipt of foreign contribution, the government has deleted Clause B. The clause used to say, a person receiving foreign contribution in a quarter of the financial year shall place details of foreign contribution received on its official website or on a website as specified by the central government within 15 days following the last day of the quarter in which it has been received, clearly indicating details of donors, amount received and date of receipt. वह इतनी टाइट वो नहीं है, अब हटा दिया गया है. In Rule 17A, which requires NGOs to intimate the ministry within 15 days whenever there is change in an NGO's bank account, name, address, aims, objectives, or key members, the deadline has now been increased to 45 days. In Rule 20, the amendments have been brought to ensure applications for revision of an order passed by the competent authority can be made to the Home Secretary in electronic form as well. ठीक है. Earlier, it had to be made on plain paper. However, the ministry will reserve the right to decide in what form the application needs to be made. छोटे मोटे चेंजेस भाई सिग्निफिकेंट तो वही था कि लिमिट्स आज़ाद कर दी गई हैं, इनको थोड़ा सा वो कर दिया गया है कि यू कैन गो अहेड एंड ओके. सीम्स इम्पोर्टेंट. देखते हैं. पुलित्जर विनर कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट स्टॉप्ड फ्रॉम फ्लाइंग अब्रॉड. गलत बात. इतनी सुंदर है, इनको तो जाने ही देना चाहिए था. Nadda sets tone for meet, BJP for people or political forces trying to run down judiciary. We are answerable only to constitution. जी सुने इनकी बात, और तो कुछ काम का देख नहीं रहा ऐसा. Okay. Hitting out at forces whose only aim is to run down the only independent organ in the country. नहीं, only independent organ थोड़ी है ऐसे तो, मतलब भाई under functional separation of powers doctrine there is a little something that legislature or executive can do to control judiciary too. तो ऐसा purely independent नहीं. और खाली independent ही बोले तो फिर ऐसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इंडिपेंडेंट है. जितना इंडिपेंडेंट ही है उतना इंडिपेंडेंट वो है आजकल, मतलब ठीक है. In the country, Chief Justice of India N.V. Ramana said Saturday that the judiciary is answerable only to the Constitution. Check. He said the party in power expects every action of the government to be endorsed by the judiciary, while the opposition wants the judiciary to advance its position and causes. Speaking at a felicitation ceremony organized by the Association of Indian Americans in San Francisco, CJI Ramana said, as we celebrate the 75th year of independence this year, and as our republic turns 72, I must add here with some sense of regret that we still have not learned to appreciate wholly the roles and responsibilities assigned by the Constitution to each of the institutions. The party in power believes that every governmental action is entitled to judicial endorsement. जो भी आप करें हम आपको एकदम हरी झंडी दिखा दे, बढ़िया है, नाइस. The parties in opposition expect the judiciary to advance their political positions and causes. ऑपोजिशन वाले बोलते हैं हमारी जो भी बात है कोई ना कोई आप डंडा मारो एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को और इस तरह से हमारी बात को ऊंचा रखो.
He said, adding, this flawed thinking of all hues flourishes in the absence of proper understanding among people about the Constitution and the functioning of democratic institutions. It is the vigorously prompted ignorance among the general public which is coming to the aid of such forces whose only aim is to run down the only independent organ, that is the judiciary. Let me make it clear. We are answerable to the Constitution and Constitution alone. To enforce checks and balances envisioned in the Constitution, we need to promote a constitutional culture in India. We need to spread awareness about the roles and responsibilities of individuals and institutions. Democracy is all about participation. अब आपका ये कर्तव्य है सर, इतनी बातें इन्होंने कह दी, देखो ये तो फालतू का ब्रेवाडू दिखा रहे हैं कहीं जा कर के। अगर ये चाहें तो खाली अपने एक्शंस से और अपने डिसीजंस से वो सब कर सकते हैं कि जो इनको ऐसा कहीं भी जा कर के मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्योंकि खोला है और कुछ बातें बोली हैं, तो अभी आपका धर्म है सर कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर इन इंडिया के ऊपर। यू शुड बी रेडी टू राइट 150 वर्ड्स। इससे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है वो पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर क्या होता है इस बारे में बेसिक वो होना चाहिए, हैं। किसे कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, व्हाट आर द सपोर्टिंग पिलर्स, हैं। और डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बाय पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी के अलग अलग शेड्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्टिसिपेटरी, रिप्रेजेंटेटिव, हैं। कौन सी वाली टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करती है, कैसे दोनों का इंटरप्ले है कि डेमोक्रेसी सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। हम कहाँ लैग कर रहे हैं, ट्रू ग्राउंड सिचुएशन, इंडियन सिचुएशन कैसी है। कह लीजिए कि भाई स्ट्रक्चरली तो वी आर ग्रेट डेमोक्रेसी, हमने आज तक कोई एक भी जनरल इलेक्शंस के होने नहीं दिया है और अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हमने किया है हमेशा से। लेकिन फंक्शनली इज इट ऑल राइट टू कॉल आवरसेल्व्स अ डेमोक्रेसी? इस बारे में वो पता नहीं कौन इकोनॉमिस्ट यूनिट ऐसे करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है, शायद उन्होंने हमारे को थोड़े कम नंबर दिए डेमोक्रेसी के रिगार्ड में, तो हमारी सरकार भड़क गई थी। वो सारे एस्पेक्ट्स एक बार देख लें भाग भाग के। Citing the example of the US, the CGI underlined the need for honoring inclusivity everywhere in the world, including in India, and cautioned that a non-inclusive approach is an invitation to disaster। ये तो सच बात है भाई, ये जो गैप बढ़ रहा है ना गरीब रईस के बीच का, चाहे इंडिविजुअल्स ले लो, चाहे ग्रुप्स ले लो, चाहे कंट्रीज ले लो, नेशंस ले लो, दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू कॉज a lot of regret among those who are not so well off, countries, individuals, humans, groups, and they are going to come back at us very soon. Not us, those who are, ये गैप ये गलत है, होमोजीनियस रहना चाहिए सिस्टम। और ये गैप कैसे बढ़ता है? लैक ऑफ डेमोक्रेसी से बढ़ता है, करप्शन से बढ़ता है, एथनिक वायलेंस, रिलीजियस वायलेंस, उस तरह से ऐसी लाइंस के ऊपर डिसीजंस लेना, इलेक्शंस लड़ना, इसी से बढ़ता है ये गैप, और ये गलत है। Complimenting the Indian community for its achievements, he said, it is the tolerance and inclusive nature of American society that is able to attract the best talents from all over the world, which in turn is contributing to its growth. Honoring qualified talents from diverse backgrounds is also essential to sustain confidence of all sections of the society in the system। सही बात है जी। जुबैर को कस्टडी में ले रखा है, क्या करें? Inflated travel rates, few rooms ahead of Qatar kick-off football fans options limited। कोई खास काम करनी है, ठीक है, इधर देखते हैं। IT firm linked to former Mumbai CP यानी Commissioner of Police didn't red flag NSE server breach, says CPI। देखो जी, the Central Bureau of Investigation, which registered a case in 2018 in the NSE co-location scam। co-location scam क्या था? जल्दी से रिवाइज कराता हूँ भाई। कि जैसे ट्रेड्स होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और
और मोस्टली आजकल दुनिया करती है कैसे डिजिटली। तो मैं तो बैठा हूँ चलो एनएससी ऑफिस के बिल्कुल साइड वाली गली के अंदर छोटी सी दुकान लेकर के अपनी, और वहाँ पे मेरे पास बढ़िया इंटरनेट सिस्टम है। तो अब यार इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती तो थ्रू सैटेलाइट या तार या ये ऐसे ही करती है ना। अब मान लो मैं बिल्कुल वहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास बहुत जल्दी आएगी। दूसरा बंदा बैठा है चेन्नई में, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचने में भले ही बहुत छोटा सा टाइम डिफरेंस आए, ग्लिच आए, लेकिन आएगा, डिले आएगा। और जितना डायनामिक नेचर है ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक्स की ट्रेडिंग के अंदर, तो ये जो टाइम डिले है, दिस एक्चुअली गिव्स एन एज टू द गाय सिटिंग नियर दैट को लोकेशन, यानी वो उसी लोकेशन में बैठा है। तो उसको लेकर के कुछ हुआ होगा स्कैम। ये इंपॉर्टेंट शब्द था, मैंने बताया। The CBI, which registered a case in 2018 in the NSE co-location scam, is probing how an audit company incorporated in 2001 by Sanjay Pandey, who last week retired as Commissioner of Police. Oh my God. Audit company incorporated in 2001 by Sanjay Pandey जी। यार ये तो गलत बात है, ये तो अभी रिटायर हो रहे हैं। 2001 में कंपनी फाउंड कर दी इन्होंने। It did not red flag that the NSE servers were compromised. The compromise had allowed one of the trading companies to get unfair access to the system, resulting in windfall profits. When the firm ISEC Services Private Limited was incorporated in March 2001, Pandey was not in service. Okay. He quit the directorship in May 2006, with his mother Santosh and son Arman becoming directors in the, मतलब कर दिया ना, साइड वाले लगा दिए ना, company. Based out of Oshiwara in Andheri, it was one of the IT companies tasked with conducting security audits at NSE during 2010 to 2015, when the co-location scam is believed to have taken place. The CBI has recorded, अच्छा ये चौकीदारी चोर निकला, oh. The CBI has recorded the statement of one of the company employees, a source said. The CBI's investigation over the course of the last 4 years long had led to the arrest of former NSE Managing Director Chitra Ramakrishna and its former Group Operating Officer Anandan Subramanian. अच्छा जी. The security audit company should have been able to detect the breaches in the NSE system during the period when the scam took place. We are looking into the processes followed by the company to test the security of the systems, a source added. Speaking of ISEC Services Private Limited, Pandey refused to talk on the issue while an email sent by the Sunday Express to ISEC company did not receive any response. An email sent to the CBI seeking its response also did not get any reply. However, sources close to the company said that ISAC was merely responsible for conducting audits of the devices used by the brokers who were using co-location facility provided by the NSE to check if they had proper internet connection, firewall facility, among other technical aspects. जल्दी से एक बार गूगल करें कि फायरवॉल का काम क्या होता है. A source said ISEC did not have any access to the NSE servers, so there was no way they could detect the system had been compromised and a co-location scam was underway. ठीक है, जिरह करते रहो. An expert told the Sunday Express that an IT auditor is responsible for analyzing and assessing an organization's technological infrastructure to find problems with efficiency, risk management, and compliance. हाँ ठीक है. An IT auditor also identifies any IT issues that fall under the audit, specifically those related to security and risk management. The audit process can extend to networks, software, programs, communication systems, security systems, and any other services that rely on the company's technological infrastructure. यार ये बोल बच्चन ठीक है. देखो समझने की दो बातें कि एक तो वो कोलोकेशन वाला मुद्दा था, दूसरा एथिक्स के अंदर भाई कि अब जब ऐसी बातें अखबार में छपती हैं, आप संजय पांडे जी पुलिस वाले हैं, आपको क्या ज़रूरत है ऐसे ऐसे मतलब अपना बच्चा और माँ के साथ में ये वो कंपनी वगैरह बना करके और
रिटायरमेंट के बाद करते हैं ना ये ऐसे। अच्छा, चौकीदारी चोर है तो फिर चौकीदार चोर इन टू सेंसेस। एक तो ये पुलिस वाले हैं, ऐसी काम को अंजाम दिया इन्होंने, होने दिया मतलब। और दूसरा चौकीदार चोर कैसे है, वो कंपनी जो जिसका काम था बेसिकली ऑडिट करना कि एनएससी के सिस्टम ठीक चल रहे हैं। अब आज वो फालतू की बातें करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई, तो वो भी चौकीदार चोर निकले। NIA गेट्स कस्टडी ऑफ 10 सस्पेक्ट्स, 10 डे ऑफ कस्टडी ऑफ सस्पेक्ट्स, पिटाई करेंगे इनकी। चलो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं आगे।